अच्छा जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। सो बहुत अरसे से मैं वीडियो लेक्चर्स नहीं भेज पाई। मैं जो हूँ आपका सिलेबस ज़रा कट कर रही हूँ। सो फॉर एग्जांपल, यूजुअली जो हमारा एक टेंस होता है उसमें हमारे चार मोड्स होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्योंकि हम काफ़ी अर्से से पढ़ नहीं पाए, तो हम दो हम हर टेंस के सिर्फ दो पहले मोड करेंगे, यानी प्रेजेंट का प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट का पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट्स नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है वो हम और भी जो हमारे एक्टिव पैसिव था वो भी नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ एक्टिव पैसिव हम सिर्फ जो सिंपल सी समरी राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग है उसको ज़रा देख लेंगे, जो कि दोनों बहुत ही सिंपल हैं। यूजुअली पैराग्राफ राइटिंग तो सबको आती होगी, समरी को ज़रा देख लेंगे। तो ये है, तो हमने प्रेजेंट सिंपल किया हुआ है, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे मूव करते हैं। So present continuous एक tense है that is used to talk about continued actions that are happening at the present moment. It is formed with be and a present particle. तो be की जो forms होती हैं present की, am, is और are, plus एक present participle. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस एक टेंस है जो इस वक्त प्रेजेंट में जो एक्शंस हो रहे हैं और जो लंबे ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यू हो रहे हैं उनके बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है, विद बी एंड अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। Present participle क्या है? A present participle is a word that ends with ing. Number two is formed from a verb, and number three is used in an adjective or to form verb tense. यानी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड है जो इन तीन कैटेगरीज में फिट आता है हमेशा। एक तो इट एंड्स विद एन ing। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है लाफिंग की। लाफिंग एंड्स विद एन ing, इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब। लाफिंग फॉर्म हुआ है लाफ से, लाफ इज अ वर्ब, ठीक है। इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम कह सकते हैं द लाफिंग मैन। तो मैन जो है उसको डिस्क्राइब करता है लाफिंग, तो लाफिंग एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। is used an adjective or to form verb tense. To form verb tense अभी हम देख लेंगे। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल होता है, और भी वर्ब टेंसेस में प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल होता है। द मैन वॉज लाफिंग। तो ये जो आपका है द लाफिंग मैन और द मैन वॉज लाफिंग, ये सेंटेंस एक ही बात कह रहा है कि एक हंसता हुआ आदमी है। बट इधर द लाफिंग मैन इस्तेमाल करने में आपको पता चल रहा है कि लाफिंग इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, और यहाँ भी द मैन वॉज लाफिंग, तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। वॉज लाफिंग इस मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है इससे हम वर्ब टेंसेस फॉर्म करते हैं, वो तो हम देखेंगे आगे। इसके जो बाकी तीन पॉइंट्स हैं वो हम फिर से देख लेते हैं। एक तो इट एंड्स विद ing, it is formed with a verb and it is used as an adjective, यानी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। रनिंग, अगर आप बात करें रन, रनिंग, ठीक है। तो रनिंग इज फॉर्म विद अ वर्ब रन, ठीक है। इट एंड्स इन ing and it is used as an adjective. The running water यानी चलता हुआ पानी। The running man was late to work। जो आदमी आपने देखा था जो भी भागता हुआ जा रहा था वो he was late to work।
the running water was cold. जो पानी आ रहा था वो ठंडा था. So water is a noun, man is a noun, and running over here is functioning as an adjective. So running is an example of a present participle. It ends in an ing. It is formed from the verb run, and it is used as an adjective. Okay. So most of these words that end in ing and can be used as adjectives are what we call a present participle. And now let's see how the present participle is used to form verb tenses. अभी हम बात कर रहे हैं present continuous की. Okay. Run. हमने run के example कर ली थी. Run. The running water is cold. Sam is running. So Sam को describe करने के लिए the adjectival phrase is running. Okay. Present participle spelling rules. The present participle is formed by adding ing to the base form of a verb. Base form वो होता है जिसके अंदर कुछ नहीं हुआ हुआ. यानी wear जो है वो wearing, wore, wears नहीं, सिर्फ wear. सिर्फ जो simple verb होता है जो डिक्शनरी में आता है, that is the base form. लेकिन some present participles have slightly different spelling rules. यानी normally you just add ing to a base form and you get the present participle. एक verb की base form में ing add करते हैं, usually you just get the present participle if it's forming an adjective also. But some present participle have slightly different spelling rules. So wear में आपने wearing लगाया और वो present participle हो गया. चूज जो है वो लास्ट लेटर उसका ई है, तो ऐसे वर्ड्स में आप आईएनजी तो लगाते हैं लेकिन आप ई काट देते हैं. सो यू राइट CHOOS एंड देन ING. टाई में IE से एंड हो रहा है, सो यू चेंज IE टू अ Y और फिर आप ING ऐड करते हैं. कुछ लेटर में कुछ वर्ड्स में आपको लास्ट लेटर डबल करना होता है और फिर आप ING ऐड करते हैं. Last letters are consonant, vowel, consonant, and the final syllable is stressed. So consonant H, vowel O, consonant P. तो जब consonant, vowel, consonant आता है तो usually, not always, but जब consonant, vowel, consonant आता है और ये जो last syllable है ये stressed होता है, यानी shop में sh, op, दो syllable है ना, word दो beats में टूट रहा है. श ऑप, तो ऑप जो लास्ट सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है. श ऑप शॉप, च ऑप चॉप. तो चॉप में भी कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट और लास्ट सिलेबल ऑप स्ट्रेस्ड है. तो चॉप को भी जब हम चॉपिंग करेंगे तो उसके अंदर जो लास्ट लेटर है वो डबल हो जाएगा. शॉपिंग, चॉपिंग, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसके अंदर we double the last syllable and double the last letter and add ing. Double the last letter unless the last letter is W, X or Y. Okay, here is how we form the present continuous. So the subject plus the present form of be plus verb ing, yani the present participle, plus the rest of the sentence. She is wearing a dress. वो dress पहनी हुई है इस वक्त. It's action happening at the present moment that is stretched out across a long time. So she is wearing a dress. So the subject plus be की form जो subject से match होती है और जो present में है, क्योंकि ये present continuous है तो be की form जो subject से match होती है और जो present में है. तो यानी am, is या are में से कुछ आएगा plus the present participle wearing plus the rest of the sentence, a dress. So she is wearing a dress. I am wearing a dress. They are wearing dresses. So whatever the subject is, उसके हिसाब से change होगा the version of be used over here, as long as वो जो नया version है वो am, is और are में से कोई हो.
क्यों? क्योंकि these are the present forms of be और हम present continuous इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये तीन शो करते हैं present और ये ing शो करता है continuous. Okay, so we are talking about an action that is happening in the present moment. The children are playing. इस वक्त बच्चे खेल रहे हैं. So if you were to show that on a time scale, you would show that sometime in the past the children started playing, and sometime in the future they will still be playing. So the children are playing. So it's a duration of time. The ing shows a duration of time. The weather is getting hot, right? So same, the weather started getting hot, गर्मी होनी शुरू हुई थी sometime over here, and we know that in the future it's getting hot, so we know in the future it will also be hot. It'll also be getting hotter and hotter. So at this present time it's hot, and it's just the weather is just getting hotter and hotter. The temperature is just increasing and increasing. So this shows that it's a continued action over a longer period of time that also encompasses the present moment. So ये action ऐसा नहीं है जो continue हो रहा है सिर्फ past में, या जो continue हो रहा है सिर्फ कंटिन्यू होगा फ्यूचर में. नो, दिस इज एन एक्शन that is continuing, starts in the past, probably will end in the future, and is continuing throughout the present. Saira is teaching English to university students this semester. They are fighting with each other. He is wearing a tie. So if we were to say that Saira is teaching English to university students this semester, so however long the semester is, 6 months or whatever, that would be your continued action for 6 months teaching English, right? Teaching English. So that's a continued action. He is wearing a tie implies that at this moment वो टाई पहना हुआ है. He will be wearing a tie in the immediate future, यानी अगले seconds में भी obviously वो tie पहना हुआ ही होगा अगर अभी पहना हुआ है, और उसने tie कभी पहले पहनी होगी. So he put on the tie in the past. So he is wearing a tie. और क्या था? They are fighting with each other. So they are fighting with each other can show that they started fighting in the past, and unless koi unhe rokta hai, they'll keep on fighting. So they are fighting with each other, right? So when we say कि future में भी होता है, तो इसका मतलब कुछ second in the future भी हो सकता है. So for example, आप अपने टीचर से आके कहते हैं कि they are fighting each other. मेरी क्लास में कोई एक दूसरे से झगड़ा कर रहा है. They are fighting each other. So you expect कि the teacher will come and stop them, right? So soon they will stop fighting. ठीक है, बहुत जल्द वो लड़ना खत्म कर देंगे. But even those few seconds that it takes for them to stop means कि वो action future तक continue है. So even अगर वो action present के बिल्कुल पास आके रुके, तब भी we see that it has continued from the past through the present to a little bit in the future, or even just at the moment of the present. It still shows a continued action that is taking place now at this present moment, and that has happened over a duration of time, even if that duration of time is only a little bit into the future, or if that duration of time started only a little bit into the past. The idea is that it has to cross the present for it to be present continuous, and it has to be an action जो एक fixed moment पे ना हो, but the ing in it implies कि एक fixed moment पे नहीं हो रहा, बल्कि एक duration of time के लिए हो रहा है. Okay, so how to form the negative of this is very simple. So in the positive, we saw the subject plus be plus verb ing आएगा.
So we are simply going to add a not after the be form. So he is not wearing a hat. We dash singing very loudly. अगर हम इसको negative करेंगे तो we will first say we, हम पहले इसको present continuous में करते हैं, we are singing very loudly, we know this, and जो be की फॉर्म है उसके बाद हम simply not add कर देंगे to make it a present continuous negative, to show that something is not continuously happening in the present moment. We are not singing very loudly. Questions in the present continuous. To ask questions in the present continuous, swap the subject and the form of be. Very simple. He is playing tennis. तो जो be की फॉर्म है is वो पहले आ जाएगी और जो सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा. दिस विल बिकम is he playing tennis question mark. ठीक है, it's in a question the verb moves to the start of the sentence, and जो be की फॉर्म है either verb means the be form, not the main verb, not the present participle, but the be की form. In a question, the verb moves to the start of the sentence. The action is happening right now. The present participle shows this. So this is very, very simple. It's just like if we were to say, I am singing. To convert this into a sentence, you take the be wala verb, am, you put it before, and you switch its position with the subject. So am I singing question mark. We are dancing. Are we dancing? Question mark. She is laughing. Is she laughing? Question mark. So fairly simple. Am, is, or are, depending on the subject, plus the subject, plus verb ing, plus rest of the sentence with a question mark. How to form is he playing tennis? Okay. Okay. The present simple and the present continuous can be used to talk about future events that are already planned. They are used with a future time word or time phrase. जब हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे थे तो जब हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे थे हमने टाइमलाइन पे देखा था, जब हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे थे कि a sentence like the sun rises in the east. सही है, the sun rises in the east सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं हो रहा, वो पास्ट मोमेंट पे भी हुआ है, वो फ्यूचर मोमेंट पे भी होगा. The train arrives at the station. तो वो अराइव करती है एट द स्टेशन मीन्स के वो हर दिन ही अराइव करती है स्टेशन पे. द ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन टुमारो. तो इसका मतलब भी है इवन दो आप टुमारो की बात कर रहे हैं लेकिन ये ट्रेन का एक रिपीटेड एक्शन है, तो आप इसको यहाँ दिखाएंगे द ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन टुमारो. लेकिन जब आप वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करेंगे अराइव्स, जो सेंटेंस आप कंस्ट्रक्ट करेंगे वो प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस होगा, even though it's used to talk about the future events. If the future event is something that is happening in the near future, and if अगर ऐसा एक्शन है जो ऐसा लगता है कि रिपीट होता है बार बार. ठीक है, सो हमने प्रेजेंट सिंपल में बात की थी. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कुछ ऐसा है, कोई एक जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल होने का मतलब है जो सेंटेंस की फॉर्म होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस वर्ब ing, ये फॉर्म इस्तेमाल होती है सेंटेंस की. लेकिन वी यूज इट टू टॉक अबाउट एन इवेंट दैट इज ongoing in the future. Let's look at what that means. The present continuous can be used to talk about pre-arranged future events. Time markers usually show whether the event is in the present or future. यहाँ पे दो प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्शंस हैं. एट द मोमेंट डेव इज वर्किंग. ठीक है, एट द मोमेंट डेव इज वर्किंग बट टुमारो ही इज प्लेइंग गोल्फ.
So at the moment Dave is working. This is one present continuous action. Dave is working. But tomorrow he will be playing golf. This is the second. Tomorrow he is playing golf. This is the second. The second action. So at the moment Dave is working, but tomorrow he is playing golf. So अगर आप structurally इस sentence को देखें, so subject be form present की, then a present participle. This is a present continuous sentence. He, subject is be की present form, playing present participle, golf rest of sentence. So again, the present continuous form. So even though action number 2 is going to happen in the future, it still can be said using the present continuous form. लेकिन कल वो golf खेल रहा है. So you can also say, but tomorrow he will be playing golf. आप ये is हटा के you can also say will be playing golf. तो इसमें जो आपकी be की फॉर्म है वो am, is और are से हट के will be बन गई. तो ये अब present continuous नहीं रहा, ये कोई और tense बन गया. तो आप इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन आप इस तरह भी कह सकते हैं but tomorrow he is playing golf. But tomorrow they are shopping. But tomorrow I am reading. But next week I am hiking in Canada. तो मतलब आप इसको इस like आप will भी इस्तेमाल करेंगे तो वो कोई और टेंस बन जाएगा, लेकिन आप फ्यूचर में एक ऐसी एक्शन की बात करें जो कि कंटिन्यू हो रहा है एक लंबी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, तो आप उसमें सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस कहेंगे. तो आपकी जो फॉर्म होगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगी, लेकिन आपने वो फॉर्म इस्तेमाल किया टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंस इन द फ्यूचर. तो जिस तरह हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल में द ट्रेन अराइव्स एट 10 AM टुमारो, कि हमने फ्यूचर की बात की थी लेकिन प्रेजेंट सिंपल फॉर्म अराइव्स इस्तेमाल किया था. उस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यू कैन टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स व्हाइल यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म. सही है, ये एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, कि वो सिर्फ प्रेजेंट में होने वाले इवेंट्स की बात तो करती है, लेकिन उसके अलावा इन सर्टेन केसेस यू कैन यूज इट टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स एज वेल. तो फ्यूचर इवेंट्स में क्या है कि यूजुअली दे टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स दैट आर ऑलरेडी प्लान्ड. तो आपको एट द प्रेजेंट मोमेंट पता होता है कि आप आगे क्या करने वाले हैं. आप बता रहे होते हैं मैं आगे ये कर रहा हूँगा, मैं कल ये कर रहा हूँगा. आपको एट द प्रेजेंट मोमेंट पता होता है. तो ये एक फीचर है जब आप फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं. और यूजुअली फ्यूचर टाइम वर्ड या फ्रेज इस्तेमाल होता है. तो इधर फ्यूचर टाइम वर्ड क्या है, टुमारो, कुछ भी हो सकता है. एट 10 AM, नेक्स्ट वीक, ये एक फ्यूचर का फ्रेज हो गया. नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट अक्टूबर. तो यूजुअली एक टाइम फ्रेज शो करता है कि आप ये कब कर रहे होंगे. और दूसरी चीज जो शो होती है वो ये होती है कि प्लान्ड इवेंट है,
तो आपको प्रेजेंट में पता है और आप प्रेजेंट में बता रहे हैं कि मैं फ्यूचर में अगले दिन या जब भी फ्यूचर में इस वक्त ये कर रहा हूँगा. So I hope this is clear. Okay. uh, how to form subject present continuous. Dave is playing golf. Normal sentence. Dave is playing golf. Normal future normal present continuous sentence plus future time phrase tomorrow. Dave is playing golf tomorrow. And suddenly is tomorrow ki wajah se this shifts into the future, but the form used is still present continuous. I am hiking in Peru next September. They are dancing at the party the day after tomorrow. They are dancing at the party. Normal present continuous sentence. This is the time phrase, the day after tomorrow. Suddenly puts it in the future. It's still a present continuous sentence क्योंकि form वो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन हम बात हाँ future की कर रहे हैं. So we can also use the present continuous to talk about future events that are pre-arranged, जिनका हमें already अभी पता है, और usually इनमें एक time phrase या time word आता है. Jack is playing soccer tomorrow. Sue is studying this evening. I am having dinner with Mike next weekend. Tom and Samantha are getting married tomorrow. I am seeing a movie later. Lisa is playing golf tomorrow. Jay is meeting some friends tomorrow evening. I am running a race for charity this weekend. So fairly simple stuff, and that is it. For your attendance, please simply जो मैं ये अपलोड करूंगी फेसबुक पे, उधर comment section में जाके write present, and that is how you'll get attendance. You have all week to do this क्योंकि आज मैं 2-3 और वीडियोस अपलोड करूंगी इंशाल्लाह. So you have all week to do this. So just do that. और आप लोगों में से जिनका फेसबुक पे नाम वो नहीं है, जो आपके अटेंडेंस रजिस्टर में नाम है, प्लीज राइट योर नेम एज इट इज इन द अटेंडेंस रजिस्टर एंड देन से प्रेजेंट. और जिनका वही नाम है उसमें तो आप सिर्फ प्रेजेंट कमेंट कर दें, and that is how, just comment, and that is how you get the attendance.